Jai Sri Ram. Welcome everybody. Welcome Vinay Ji, Vinay Ji, and Seema Ji. Welcome, and Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, welcome to Bharat all the Mata Ki Jai. viewers. And yeah, today it's going to be an incredible topic. Okay, Khalistani terrorist attack, Indian embassy and staff in US, Canada, Europe. Okay, yeah, and there is a big warning coming from Jaishankar ji, from the Minister of External Affairs, Jaishankar ji. And is it is enough? Yeah, they need some good treatment like Yogi Ji's treatment is the topic today. Friends, whatever you think, any questions, post it here, any comments, post here. Please like the video, comment on the video, share the video as much as you can, friends. And what do you think? Okay, Jaishankar Ji's warning will work, or they need Yogi Baba treatment? Okay, is the question. Vinay Ji, welcome. Before going to you, please make sure to like the video, comment on the video, share the video, and please make sure to subscribe the channel Bharat Mark, and also press the notification bell to make sure when you get notified as we go live, along with the heading, so that you know what we are going to talk about, so that you can come and join us and become the part of the conversation. Vinay Ji, the Khalistani terrorists not only attack San Francisco in the night, the Indian embassy, okay, and also now, you can see here, hopefully, they have put out the faces of the Indian consulate officers in the poster in Canada, with a kill kind of thing that is hidden here, okay, for because we don't want to show that. That's why the kill thing it's here, okay. And it's what is happening. So Jaishankar ji is warning. What do you think about it? Please carry on. Yeah, so couple of things. One is we just a couple of days ago the Indian consulate in San Francisco was set on fire, and fortunately nobody was injured and no major damages. The fire department from the city of San Francisco came in and doused the fire. Uh, but what's happening is these guys seem to be getting braver and braver, and the issue with issue that I have here is that while the U.S. State Department spokesperson Matthew Miller said the U.S. strongly condemns this reported vandalism and attempted arson against the Indian consulate in San Francisco on Saturday. Vandalism or violence against diplomatic facilities or foreign diplomats in the U.S. is a criminal offense. Fantastic. Obvious, this is great. But what's the next step? You can give all kinds of statements. And then what? Like, are they going to do anything? Are they going to investigate? Are they going to arrest some people? Are they going to put them away for years? US is known for their severe punishments for criminals. But are they going to take action and do something about this? And then next, the same bunch of Khalistanis are apparently they're taking out a rally in Canada on the 8th of July, and I believe you had that on your screen moments ago. And so these guys are now saying that they're basically in their posters and stuff, they've got the pictures of two of the important diplomats from India. One is the consulate general from India, and the other one is the Indian, the guy who heads the Toronto consulate. So these guys have been targeted. Basically, they're saying that these people will be attacked, killed, or whatever. And how the heck do these people have that kind of guts? And then, yes, Jaishankar ji has contacted the what's her name, the foreign minister Melanie Jolie in Canada, and she has apparently assured safety of Indian diplomats, and and saying that it's not good for relations. It's extremist Khalistani
ideology is not basically is not allowed and stuff like that. Okay, we will come in detail over there. Just give me a minute. I'll go to Seema ji. Seema ji, your video is going on and off. Just make sure that it is okay. And Seema ji, आप क्या बोलेंगे? ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, ओके, एम्बसी को जलाया और यूरोप में भी काउंसलेट का ऊपर अटैक हो रहा है, इधर काउंसलेट का स्टाफ का ऊपर अटैक हो रहा है, इधर अभी अभी कनाडा में ये हुआ कि इंदिरा गांधी का जैसा जिसने गोली मारा उसका इतना प्रदर्शन हुआ, बहुत आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? और जयशंकर जी का जो वार्निंग है ये सफिशिएंट है या मैं पूछता हूं आपको कि योगी बाबा का ट्रीटमेंट चाहिए? ये सारे बंदों के लिए अपने भाई बंदे अंदर हैं, मतलब भारत में हैं, उनका घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, क्या चाहिए? बुलडोजर लगाओ, अंदर लगाओ, क्या करना चाहिए? यू आर ऑन म्यूट, इज इट? यू आर ऑन म्यूट। ये लोग एक्चुअली सिर्फ आतंकवादी माइंडेड ही नहीं है, ये मानसिक रोगी भी हैं। और बिल्कुल हमारे जो योगी जी ने जिस तरीके से यूपी का सुधार किया, वहाँ के टेररिज्म जो गैंगस्टरवाद था उसको कंट्रोल किया, तो पूरी दुनिया फ्रांस में भी इस चीज की चर्चा हुई, पूरी दुनिया को पता है। और आई थिंक अगर यूएसए, कनाडा या यूके में ऐसे एलिमेंट्स, गलत एलिमेंट्स इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो आई थिंक योगी जी से पूरा ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट मंगवाना चाहिए इनको, क्योंकि बहुत शर्म की बात है कि इन कंट्रीज में अगर हमारी एम्बेसीज के ऊपर ऐसे मानसिक रोगियों द्वारा अटैक्स किया जाता है तो ये चिंताजनक है। मानसिक रोगी क्या है? टेररिस्ट का हिंदीकरण है क्या मानसिक रोगी? मानसिक रोगी मतलब कि इनको देखिए, मोस्टली अगर आप इनको नोट करें ना, इनकी ये डाइवोर्सी हैं सारे, इनकी बीवियां इनको छोड़ के भाग गई, इनके बच्चे इनसे बात नहीं करते, और ये पूरा फुल टुन होकर रात को शराब पीकर और उसके बाद टिकटॉक पे बैठ जाते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान। तो ये मानसिक रोगी हैं, इनको तो मेडिसिन चाहिए, इनको तो। अच्छा, ये टेररिस्ट नहीं है? आप इनको टेररिस्ट नहीं मानते हैं? ये प्लस मानसिक रोगी मतलब कि इनको लस्ट है इन चीजों की, इनको कुछ ना कुछ गंदगी फैलानी है, ठीक है। घर में इनकी बीवियां भाग गई, मोस्टली मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ, जितने भी ये फेमस बदमाश है सब डाइवोर्सियां या बीवियां छोड़ के जा चुकी हैं, मतलब ऐसे पागल लोग हैं ये, इनके साथ इनकी अपनी फैमिली नहीं रहना चाहती। तो ये समाज के लिए खतरा है, समाज के लिए जैसे गंदगी है, गंदगी फैला रहे हैं, तो इन पे सीरियसली मतलब कि कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है अगर यूएसए और कनाडा में ऐसे होता है। लोकल लोगों को भी इनके ऊपर केस करने चाहिए, जो वहां के सिटीजन्स हैं, इंडियंस, पंजाबी हैं, दूसरे हैं, अपने सबको मिलकर इनके ऊपर केस ठोकने चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए भी खतरा है। ये पागल लोग हैं, ये नॉर्मल लोग है ही नहीं है जी। So Vinay ji, what do you think? Okay, let me ask you this one. आपका वीडियो ऑफ एंड ऑन हो रहा है, जरा जी जी मुझे पता, मैं कर रही हूं। ओके विनय जी, आप ये बोलिए, प्लीज से मी दिस वन. What do you think is the right treatment for them? Because I was just listening in a video that how the Russian once took care of the terrorists from Afghanistan, okay, and how they caught hold of their family and they gave the same treatment what the terrorists would have given for somebody else, and they got so scared. So do you think there is a bulldozer treatment needed here? Absolutely. I think the diplomacy and the whole negotiation with the counterparts and all that, it can only go to a certain extent, because the people who are spearheading this movement, the so-called movement of Khalistan, are kind of, I agree with what Seema ji just said. Like, these guys are incorrigible. They don't have the understanding, they don't have the semblance to kind of see what can be done and what cannot be done. No, so come on, you cannot say that they put langar. No. Langar is not by these Khalistanis. Langar is the pure Punjabi Sikhs who are actually Punjabi Hindus don't give no money, huh?
What, Seema ji? Punjabi Sikhs are Punjabi Hindus are a different category. Punjabi Sikhs Let me ask you this, Seema ji. I'll bring 1 second to Seema ji. Vinay ji says langar is run by Punjabi Sikhs. जी बिल्कुल, गुरुद्वारों में तो वैसे पंजाबी ही जाते हैं, क्योंकि वीकेंड को ऐसे होता है कि Who is funding that? Who is funding that? बिल्कुल नॉर्मल लोग करते हैं फंडिंग, और उनको नॉर्मल नहीं लोग करना कौन है? चाहिए। हिंदू करते हैं या नहीं करते? नॉर्मल पंजाबी, बिल्कुल हिंदू भी साथ में करते हैं, क्योंकि देखिए कौन पंजाब ज्यादा में करता है? हिंदू ही करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा है संख्या में। टॉक अबाउट दैट, नो? जी बिल्कुल, अपने बुद्धू तो करते ही है। जी बिल्कुल, उन बुद्धुओं के बाद में बात करो भी। जी उनको खाने को, हलवे खाने को पैसे चढ़ाते हैं, ये हिंदू ही चढ़ाते हैं। तो आई थिंक अब जो है पानी सिर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोकल लोगों को इनके खिलाफ जो है अब एकजुट होकर बाहर आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, को इनके ऊपर केस करने चाहिए, मीडिया में भी बोलना चाहिए। आई थिंक ठीक नहीं है। गुरुद्वारों में मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं जो कहते हैं कि हम देखना नहीं चाहते इन लोगों को गुरुद्वारे में जो आते हैं। गुरुद्वारे इन्होंने यहाँ भी एक कहते हैं कि आतंक का, दहशत का जो है प्लेस बना रखा है, और हमारे बच्चे भी कहते हैं, बड़े हो रहे हैं, लोग ऐसे बताते हैं कि हमें ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए। तो क्योंकि पंजाब के जो है, पंजाब में हिंदू सिख आपस में शादियां की हुई हैं, तो सब नॉर्मली मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, असली पंजाबी हैं, रियल पंजाबी, वो इन आईएसआई के टट्टुओं से बहुत तंग है, और वो आप लेकिन आईएसआई के बारे में बात मत करो, मैं आपसे प्लीज स्टॉप। ये है तो वही, आईएसआई देखिए वो बिस्किट ये देते आज हैं, उनके बारे में बात मत करो प्लीज। वो बिस्किट लगाते हैं इनके लिए, जी उनके जी बारे में बिल्कुल, बात बिस्किट, मत करो। हाँ बिल्कुल, बिस्किट दिखाते हैं, और ये भारत के खिलाफ भौंकते हैं बिस्किट उनके खाकर। तो ये रियलिटी है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन मैं तो पंजाबियों पे दोष इसलिए लगा, मतलब कि मढ़ती हूँ कि पंजाबी चुप क्यों है? ऐसे कैसे कि अगर ये थोड़े से लोग हैं, मानो 100 में से अगर दो हैं, ठीक है, 100 में से 2% अगर ये गुरुद्वारे में गंदगी फैला रहे हैं, तो बाकी सब जो 98% लोग हैं, वो चुप क्यों बैठे रहते हैं? नहीं, उनको उधर 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 गुरुद्वारा में संत भी तो हैं। वो स ये कौन से संत? कौन से संत? कौन से? संत भिंडरानवाला जी, जी, वो बिल्कुल वो संत हैं, वो उनका ठीक है। पिक्चर भी है, हाँ, और एयर इंडिया का संत भी बैठे जी, जी, हैं, जी, जी। अगर ऐसे संत, अगर ऐसे टेररिस्ट संत बनने लगे ना दुनिया के, तो दुनिया तो गई बस फिर। दुनिया का सत्यानाश this is निश्चित है। I'll go to Vinay ji. Vinay ji, it is a sham of the Modi government. Otherwise, our friend Amrit Pal would have become sant too. No, it's like Osama bin Laden is considered a mullah. He's considered one of like the descendants of prophet or whatever, right? Like he's given a high esteem and high respect in the Muslim community. So likewise, Bindranwale is also considered a sant. Of course, he is, and he should be, because he was watching 15 porn movies a day. You cannot do that. End of the day, they talk about the 72. So he has to get the honor. Yeah, 72 versions or whatever, right? So that's pretty much what it is. So, but what I'm trying to say is, the diplomacy is not going to work here. What is going to work is India should take stern action. Remember what happened a few months ago when the embassy in United Kingdom was attacked in London, and UK was not able to provide security. Guess what India did? India took off the security in Delhi around the United Kingdom's consulate, right? And they put the toilets next to them. Pretty much. So these are the actions that need to be taken. Okay. And this only Modi government can take these kind of actions. Only S.Jaishankar can take these actions. Only Amit Shah can take these actions. Right? Absolutely. And means, how do you see the politicians here, Seema ji? ये तो देखते ही नहीं है, ये तो ऐसा ही बैठे रहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं हो. कि consulate, we have seen before any consulate, any other country's consulate being attacked.
अफगानिस्तान जैसा जहां टेररिस्ट रूलिंग होती है, उधर अटैक होती है, ये वेस्ट बोलती थी कि उस वक्त वो इधर टेररिस्ट अटैक किया, इस आतंकवादियों ने ग्रुप ने इधर अटैक किया। अभी तो यूएस और कनाडा में काउंसलेट सेफ नहीं है। इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए जो कीटाणु होते हैं वो तो नुकसान ही पहुंचाएंगे ना। अब ये कीटाणु वहां से उठकर अगर इधर आ गए तो ये अपनी जो कहते हैं इनका स्वभाव होता है, इनका जो आतंक फैलाने का स्वभाव है वो थोड़ी ना छोड़ देंगे, चाहे इनको कहीं भी ले जाओ। इसलिए इन देशों को भी समझना चाहिए कि आतंकवादियों को खिलाना पिलाना, उनको प्रोटेक्शन देना मतलब कि अपने देश को भी खतरे में डालना, क्योंकि एक सोच, ये इनकी जो सोच है ये एक बीमारी है और इस बीमारी को फैलने से रोकना चाहिए। जैसे अभी फ्रांस में भी हुआ, फ्रांस में ये हो रहा है, जी अभी तक बिल्कुल बंद नहीं हो हुआ। रहा है। तो हाँ बिल्कुल, जब से भारत ने चेताया था काफी साल पहले कि जो हमने सहा है अब आप लोग देख लेना, अब आप लोग, अब क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते थे ना ये बड़ा, तो अब सेम हो रहा है यहाँ भी। तो एंड या जी, प्लीज अगर प्लीज गो। यूएसए, कनाडा जैसे, यूके जैसे देश अगर सीरियस नहीं हुए इन लोगों की जो टेररिज्म की जो सोच को स्टॉप करने के लिए, तो इनके देश भी नर्क बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग जो है इनकी सोच जो है कंटिन्यूसली वायरल हो रही है और वो ठीक नहीं है। And Vinay ji, if anything like France happened, these guys will not support the country. I'm talking about the Khalistani terrorists. They will support the jihadis because, for obvious reasons. No matter whether they take their wives, whether they take the daughters from them, whether whatever they do, it doesn't matter. They are their boss. No, I उनका mean, तो like हक होता ही है। the entire Khalistani movement. I'm not sure if we have discussed this in the past, but I want to reiterate that the entire Khalistani movement is funded by Pakistan. Mhm. Okay, they have a very hidden agenda here, and I'm not even sure if and I don't want to say it explicitly, but I'm you know how I am. I'm pretty open about things, right? There is a possibility that even there is support for these Khalistanis from within India from some major political party, and you know who I'm talking about. So it's basically a nexus, I should say, a nexus, not a combination, a nexus between an Indian political party which has a vested interest in this whole thing, and Pakistan that are supporting the Khalistani movement. And But you funding talk about Canada, no? You talk about Canadian politicians who let this happen. Why are you talking about Congressy and Pappuji? I'm not talking about Congress or Papuji. I'm only talking about Okay, an you talk Indian about either ka political Pappu. party. Okay, You and talk Pakistan. about Canada's Pappu. Don't talk about Bharat ka Pappu. No, एक्चुअली I'm coming to that. The thing is, our government here in Canada is a coalition government. It's a minority government that is supported by NDP. Okay, it's a liberal government that's run by Justin Trudeau, and the NDP is headed by Jagmeet Singh. And Jagmeet Singh, obviously, we all know that he is a Khalistani sympathizer. Okay, and his parents, his grandparents, or whoever, they took refuge in Canada. They came as refugees. They didn't come as you or I, right? We came in as professionals. We came under a different category, but these guys came in as refugees, and now they've got And that's something how they like become the scientist here. I'm sorry. They all become scientists and Nobel lawyers and things like Yeah. that They here. become they and the worst thing is they become politicians. Okay, the worst thing. That is the worst thing. That is what Plumber to bothers. They can become politician. scientists. They can become police officers. They can become engineers. But the worst thing is when they become politicians, because these are the lawmakers, and when they take over, become lawmakers, right? God help Canada. This is where we are stuck right now, and unfortunately, if Jaishankar doesn't take a stern action against this government, you know, it's going to go hell in a handbasket, pretty much. Only thing that is probably a relief is if conservatives come into power, maybe something is going to happen. But again, I won't assure you there.
because I mean, like we talk about politicians, they kind of give you all kinds of promises, they make all kinds of promises, and they never fulfill those promises. And the only other action is, you know what happened to Nijjar? Okay, the guy was brutally killed by two people, unknown people. Okay, and then we also know what happened in UK, and we know what happened in the US. There are Khalistani terrorists being targeted by some unknown Yeah, means agency person, whatever. some goons pay them money and take them off, kind of I thing. have no Whatever. idea who is behind all of आपस this. आपस This में कर has रहे to हैं continue. आपस में ये आपस में Yeah, एक yeah. दूसरे पे अटैक करते हैं। ये गुल्लकों के लिए तो गुरुद्वारों में आपने देखा या कैसे तलवारें लेकर एक दूसरे के पीछे भागते हैं। इसी तरह ये जो पिछले टाइम से अटैक्स हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये आपस में ये पैसे के लेन देन की ही लड़ाइयां, इनकी अंदरूनी लड़ाइयां हैं। अदरवाइज ये हमें झूठ बोलने में तो ये नंबर 1 है। ये हमें ये पहले भी ऐसे मगर गुंडागर्दी मगर करते थे। सीमा जी, आप बोलते हैं अंदरूनी लड़ाई बोल के, वो तो बोलते हैं इंडिया ने मार दिया हमें, वैसे हमारा बोलना एक ये संत झूठ, बनने वाले थे उनको तो ये तो वो झूठे। भगवान हाँ, के पास भेज दिया। अब कहना तो इन्होंने ऐसे ही है कि भारत ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन ये सबको पता है कि ये आपस की इनकी लड़ाइयां हैं, पैसों की लड़ाइयां हैं। ये सब फिरौतीबाज हैं, गैंगस्टर्स हैं, आतंकवादी हैं, और ये नॉर्मल लोग नहीं है। पैसे के लिए एक दूसरे का कुछ भी कर सकते हैं ये। जी बिल्कुल। विनय जी, विनय जी, आई एम गोइंग फॉर लास्ट क्वेश्चन टू यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वर्ड, सेम क्वेश्चन टू यू सीमा जी आफ्टर दिस। ओके, Jaishankar does, yes, Jaishankar ji does a tough talking, okay, against terrorism of Khalistanis and others. Okay, is it enough? Our bulldozer model has to be applied in India. What do you think need to be done? 30 seconds. What do you say to Jaishankar ji if you are talking? Unfortunately, the India does not have jurisdiction over Canada, US, or UK. No, or their Australia. family is there. Their family is there in India. No. What I'm saying is, if you want Yogi Adityanath's, formula to work in these countries, he has to have jurisdiction. India will have to have jurisdiction. But if we talk about what is the action that needs to be taken, diplomacy, I already told you that, and I'm going to reiterate myself. Diplomacy is not going to work with these guys. What is going to work is an eye for an eye, a tooth for a tooth. Okay, so that is what is going to work. And this infighting has to be created either somehow artificially or intentionally or whatever. And you got to get them to fight within themselves, and that's how they'll eliminate themselves. And then something has to be done, with regards to India taking stern action. Okay, now Seema ji, what do you think? Their family is back home. See, ab hua hai. I will just say you in Madhya Pradesh what happened. You remember one guy, 5 jigadis caught one guy, one Hindu boy, and made him to bark like a dog and other thing. वो बोल रहे थे कि मेरा माता कुत्ती है, मेरा पिता कुत्ता है, ऐसा. You know that? This happened in Madhya Pradesh. Immediately on the next day morning, their homes were destroyed, bulldozed. शिवाजी, बिल्कुल शिवराज सिंह देखिए, हाँ बिल्कुल, इनका क्या होना चाहिए भारत में? जी बिल्कुल, ये बुलडोजर ट्रीटमेंट होनी चाहिए इन पे। जितनी भी इनकी, जैसे ये अगर विदेशों में भारत की एम्बेसीज को नुकसान पहुंचाते हैं या इस तरह के टेररिज्म वहां पे करने की कोशिश करते, तो पंजाब में इनकी जो बिल्कुल बुलडोजर इनकी प्रॉपर्टीज पे चलने चाहिए, जमीन कर देनी चाहिए, और उस जमीन पे सरकार जो है अपने कब्जे में ले ले। इनको भारत एयरपोर्ट से उतरते ही जेल के अंदर इनको एंट्री बिल्कुल नहीं। और जो नेपाल की तरफ से ये बहुत आते हैं ना, वहां भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। नेपाल की तरफ से जो घुसते हैं हमारे देश में, और जिन बॉर्डर्स से घुसते हैं, ये वहां पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। ये तो 4 दिन में सुधर जाएंगे। हमारी देश को इन लोगों ने मजाक समझ रखा है क्या? प्यार की बात अगर इनको समझ नहीं आई, इनको ब्लैक लिस्ट से बाहर किया था गवर्नमेंट ने, इनको बहुत फैसिलिटीज दी थी, बहुत किया था, लेकिन इनको समझ नहीं आया। तो अभी आई थिंक योगी ट्रीटमेंट ही बेस्ट रहेगी इनके लिए। जी, और भगवंत मान ऑलरेडी योगी ट्रीटमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं। भगवंत मान जो पंजाब में है,
और अभी जो वहां चाय पी रहे हैं असम में, वो मानसिक रोगी, कभी भूख हड़ताल, कभी ये कह रहे हैं कि हमारे तंबाकू खिला दिया रोटी में, ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर वहां तो बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैं अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगी, एक भी बंदे को छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो सब पागल और मानसिक रोगी हैं। उनको जेल में रहना ही पंजाब की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और अगर नहीं, उनके फेवर में मानसिक ये कोई रोगी, बोलता है, आई एम जस्ट सीइंग द ट्रांसलेशन। मानसिक रोगी का मतलब है मेंटली इल। मेंटली अपसेट नहीं, ये तो पीपल, मेंटली इल के लिए, पैसा के लिए काम करने वाले हैं, ये तो बिस्किट लेके काम करते हैं, तो वो इनका क्या है। मेंटली होते हैं। इनको पता नहीं इनका फिर फ्यूचर क्या है, रिजल्ट क्या I है, इनको पता agree. होना चाहिए ना। Yeah, इनको पता yeah. होना चाहिए। One last question. I'm done with this. I'm Vinay ji. Already, there are a lot of Hindu students go missing and dying in Canada. I'm sure that is a big story which is never been talked about. You know, now how safe are the Hindu kids with this scenario in Canada? I'll tell you, Reema, with such movements going on around, they are targeting Hindu temple, they are targeting Hindus, and I don't know if you've been to Swaminarayan temple recently. I went there just about a week ago. Okay, and that place has been totally converted into some kind of a army barrack. There is so Wow. much security there, it's unbelievable. Because obviously, you remember a few months ago, Swaminarayan Temple in Toronto was vandalized, targeted with people putting graffiti on the walls, painting graffiti on the walls saying One Khalistani of the Zindabad. 15 odd temples that was attacked. Correct. And it was one of the 15 odd temples that were vandalized. So now, yes, Hindus have to do something about it, and they need to raise to the occasion and put security around these temples, exactly like what Swaminarayan Temple has done. And I don't think it's a bad thing. I don't know if you noticed one of the Canadian politicians who's supporting the whole movement, right, of these Yes. Hindus. And he said that, you know what, I'm going to personally come and sleep in these temples and protect the Hindus. You need such politicians. You need this thing, because Hindus are being targeted. Hindus are being Hindu children are being targeted. Let's talk right. about that. Hindu's Yeah, children are being targeted. correct. And it happened in Germany. And who better to ask this final question to than Seema ji? Seema ji, अपने बच्चों को मारा जाता है. आपको तो देखे थे आपने जर्मनी में कैसा जी हुआ. बिल्कुल, यहाँ पे हैम्बर्ग में 2 हिंदू लड़कों के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया। एक इवेंट के बाहर जब वो आ रहे थे, घर लौटने के लिए जा रहे थे, तो छुप के बैठे हुए थे ये झाड़ियों में चाकू लेकर, छुरियाँ लेकर, तो उनको अटैक किया। अंदर से भी आए जो खालिस्तान खालिस्तान कर रहे थे, बाहर आके हिंदू लड़कों पे अटैक किया। और भी ये टिकटॉक पे तो आए दिन धमकियाँ देते हैं, खुलेआम धमकियाँ देते हैं कि हम सौदे लगा देंगे, मार देंगे जान से, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो ये सब इनको बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। यहाँ हमारी सरकार को, यहाँ की गवर्नमेंट्स को बिल्कुल प्रेशर करना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ की पॉलिटिक्स में हमारी इतनी इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, इतने अच्छे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये यहाँ के सिस्टम में एंटर हो तो सिस्टम को सुधार करें ना। अब पॉलिटिक्स में भी यही एलिमेंट्स हैं, तो हर जगह तो मुश्किल। Absolutely. Friends, at the end, I have a question to you. Please answer. Our question is very simple. Do you think Jaishankar ji's tough talking on the Khalistani terrorists will work? Will make US, Canada kind of these chaplusi countries which are working on nothing but white supremacy and dividing India will take a note and change their tune against these terrorists, or India needs to implement Yogi ji's bulldozer model back in India? What do you think? Please comment and let us know. And till then, we will see you in the next video. And thank you, Vinay ji. Thank you, Seema ji. And Jai Jai Sri Ram. Jai Jai जय Sri श्री Ram. राम।